Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Narendra Yadav. Today I am going to teach you very important lesson which is very helpful for spoken English. In this video I am going to teach you about present indefinite tense. There are some sentences and I am going to teach you how to speak in English. So let's start this class. And before start this class, if you came to watch my video first time, then please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon. So let's start. So students, you can see all these sentences are related to present indefinite tense. Is it clear? And we studied already about present indefinite tense. What is the structure? I already told you about what is the sentence making structure of present indefinite tense in previous class. So what I told you, I am going to tell you again also. So rule number first is third person के सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या एस लगता है. Is it clear, student? This is our rule number first. What is this? So now I am going to explain about rule number first. Rule number first is third person. I already teach you. I told you third. We have three person in English grammar: first person, second person, and third person. And we have two numbers: singular number and plural number. Singular number means ekvachan, plural number means bahuvachan. And first person means when we will talk about one, second person when we will talk about two, and third person three. 1, 2, 3, just like that. And this is our rule. And this rule is related to present indefinite tense. First rule is third person के सिंगुलर नंबर. थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या सब आता है? ही, सी, इट और नॉन, राम, श्याम, etc. एटसेट्रा. नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है. एज फॉर एग्जांपल, जस्ट लाइक मैं खेलता हूँ, तो मैं खेलता हूँ, तो दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एंड मैं खेलता हूँ, मैं इट इज आवर सब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट, वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर सब्जेक्ट. It is related to which number, which person, first to which person and then number. And we have to find, is it related to third person singular number or not. If it is related to third person singular number, then we have to use s or yes with verbs. Okay, just like मैं खेलता हूँ, that means I play. Why I tell I play? Because this subject is not related to third person. This subject is related to first person singular number. And I का V क्या हो जाता है? Plural हो जाता है. So another example, let's talk about another example. Just like third person, वह खेलता है. First I told you मैं खेलता हूँ, तो I play. And वह खेलता है, that means I am talking about another person, another people. And that is singular noun. Okay, तो वह खेलता है या वह खेलती है. when I will talk वह खेलता है, that means I am talking about male gender. And when I will tell वह खेलती है, that means I am talking about female gender. So when we talk about male gender, we always use he, and for female gender she. Is it clear? You should keep remember always. And वह खेलती है, that means she plays. So you can understand here, she plays means she is related to third person singular number. That's why play is our verb. That's why play के साथ हम लोग क्या लगाए? मैंने क्या बोला आपको? प्लेज मतलब वर्ब का ये फिफ्थ फॉर्म एस या एस. वह खेलता है, ही प्लेज, एंड वह खेलती है, सी प्लेज.
यदि हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे वह खेलता है, ही पले और वह खेलती है सी पले, तो ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। तो आप लोगों को हमेशा ये ध्यान में रखना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैं जो पढ़ाने लग रहा हूँ आप लोगों को, तो ये इसमें ज्यादा सेंटेंस नहीं ले रहा हूँ, बहुत कम लिमिटेड सेंटेंस ले रहा हूँ, लेकिन इसी सेंटेंस को मैं आपको पढ़ाते हुए मैं आप लोगों को बहुत सारे सेंटेंस को कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट, सो यू शुड नॉट थिंक बैड अबाउट इट। एंड ये एंड व्हाट इज आवर सेकंड रूल। सेकंड रूल में ये होता है कि इसके थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगता है और बाद बाकी के साथ नहीं लगता है। बाद बाकी के साथ वर्ब का वैसे ही नॉर्मल फॉर्म रख दिया जाएगा, लगा दिया जाता है। इज इट क्लियर? सो लेट्स टॉक अबाउट आवर सेंटेंस। तो आवर सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट? फर्स्ट सेंटेंस इज वह खेलता है। तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, वह खेलता है, तो वह खेलता है, तो वह व्हाट इज दिस इज आवर सब्जेक्ट, वह खेलता है। एंड वह खेलता है, ता है, ती है, ते हैं, तो है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये सेंटेंस, ऑल these sentences are related to present indefinite tense. Is it clear student? So ये this is our subject and वह खेलता है, तो this subject it is in third person singular number। तो हम लोग इसके वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? ऐसे यस लगाएंगे। तो वह खेलता है, that means how we can say in English, he play means खेलना, he plays, play। तो you can see here student, this is our subject and it is related to third person singular number, and this is our verb, play, play। This is our what? This is our verb। एंड वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है बच्चों? क्रिया। सो दिस इज आवर वर्ब एंड आई यूज एक्स्ट्रा हियर एस। आई टोल्ड यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगता है वर्ब में। इज इट क्लियर? सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट? नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट सेंटेंस। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज वह खेलती है। तो लुक एट हियर, वह खेलती है, तो वह, दिस इज आवर सब्जेक्ट। ओके, and this subject is related to third person singular number because it is talking about specific, मतलब one girl, वह खेलती है। खेलती है, ता है, that means it is talking about male gender, and ती है, that means it is talking about female gender। तो फीमेल के लिए सी लगाते हैं और मेल के लिए ही लगाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो वह खेलती है, तो how we can say in English? वह खेलती है, that means she plays। Is it clear student? It is also same verb, kriya, and this is our subject। Okay, both are same। There is only difference between gender। Okay, and now I am going to talk about our next sentence। Our next sentence is राज हंसता है। तो राज हंसता है, राज what is this? This is our subject and this is verb। हंसना, गाना, सोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, all are verbs। Okay, so this is our subject and this subject we need to find this subject, I mean any subject, when we will talk about present indefinite tense, then we have to find only 2-3 things। First one is we have to think about subject, and then we have to find this subject is related to which person, first person, second person, third person। Okay, because we have only 3 person, first, second, third, and after that we have to think, because without by thinking we cannot do anything। We have to follow the rules and then we have to apply it। Okay, because it is not philosophy, it is all the English grammar, everything based on the rule। With practice you can improve your English, speaking English, everything। Okay, so we have to find a person, then we have to find a what? Noun, singular or plural। Okay, and then we have to apply the rules। So here is our sentence। This is our sentence। राज हंसता है, तो this Raj, this is subject and it is in third person, and it is talking about only one Raj, not many Raj, or not there is not another people, another boy, another girl with this Raj। Okay, so that's why it is in singular। तो राज हंसता है,
how we can say, how we can speak in English. राज हंसता है, that means राज हंसना means laugh, राज laugh, Raj and laughs. S. I put here S. You should keep remember always, because this Raj, this is related to third person singular number. That's why verb के साथ यहाँ पे मैं S लगाया हूँ. S. Okay. Laughs. तो Raj laughs. And now I'm going to talk about our another sentence, which is शिक्षक पढ़ाते हैं. तो शिक्षक, this is our subject and this is verb. तो how we can speak in English? How we can say in English? How we can speak in English? शिक्षक पढ़ाते हैं. तो शिक्षक के साथ यहाँ पे हम लोग बच्चों द लगाएंगे. क्यों? You can ask question from me also. Why you are using the with teacher? Because ये जो शिक्षक है हमारा, ये शिक्षक एक स्पेसिफिक टीचर के बारे में बात किया जा रहा है. यहाँ पे बहुत सारे शिक्षकों के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, एक स्पेसिफिक एक खास टीचर के बारे में बात किया जा रहा है. जब भी कोई चीज खास होता है और कोई भी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात किया जाता है, और जो चीज के बारे में आपको भली भांति अच्छे तरीके से मालूम है, तो हम लोग उसके साथ क्या लगाते हैं? द लगाते हैं. जस्ट लाइक कैट, जस्ट लाइक बैल, दिस बैल, गाय, कैट. When we will talk about a specific cat, मतलब कोई खास बिल्ली के बारे में बात करेंगे. When we will talk about a specific cow, किसी खास हम लोग गाय के बारे में बात करेंगे, then we have to use the, okay, before that subject. Is it clear? I hope your dot has cleared. So शिक्षक पढ़ाते हैं. How we can speak in English? The teacher means शिक्षक पढ़ाते हैं. पढ़ाना means what? पढ़ाना means teach मतलब पढ़ाना या सिखाना, और read मतलब पढ़ना. What is this? You have to understand the difference between this. Read, one word, read, and another word is teach. Okay, so let me tell you about these two words. First word is read and another word is teach. So read मतलब what? Read मतलब पढ़ना. That means when we read something and when we try to understand by using our eyes, our brain, the help of our brain and eyes. So when we read for getting some information, some knowledge. So मतलब खुद से हम लोग जो पढ़ते हैं, खुद से कोई चीज सीखते हैं, तो वही हमारा रीड होता है, मतलब पढ़ना. इन हिंदी वी कैन से पढ़ना. एंड टीच मतलब सिखाना. जस्ट लाइक आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, एवरीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश. आई एम टीचिंग यू एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम मी. दैट मीन्स आई एम टीचिंग यू, मतलब आई एम गिविंग यू समथिंग important knowledge, and this knowledge, it will be very helpful for your life, your personal life, your professional life, everywhere. Okay, so teach मतलब सिखाना. Is it clear student? So the teacher, तो ये जो है हमारा, ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में चला गया, तो वर्ब के साथ इसमें S लगेंगे. द टीचर टीचेज. The teacher teaches. Okay, and now I am going to talk about our next sentence, which is गाय दौड़ती है. तो गाय दौड़ती है. This is our sentence. तो how we can speak in English? तो first, before I speak, we have to think and we have to identify. So this is our subject गाय, and here it is talking about a specific guy. कोई भी स्पेसिफिक गाय के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है. इट इज टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक गाय जो कि फिक्स है, तो इसलिए हम लोग इसके पहले द लगाएंगे. ओके, सो गाय, द कॉ, गाय दौड़ती है, द कॉ
runs. ओके, सो दिस इज आवर सब्जेक्ट द कॉ। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे द क्यों लगाया हूं मैं कॉ से पहले, क्योंकि कॉ जो है स्पेसिफिक किसी खास किसी पर्टिकुलर कॉ के बारे में बात किया जा रहा है। और रन्स बिकॉज दिस कॉ it is in third person singular number, okay, because it is talking about only one cow, that's why I use here s. And now I'm going to talk about our next sentence. Our next sentence, बैल खाता है, तो how we can speak in English? तो बैल खाता है, this is our subject and this is verb, and this subject is related to third person singular number, okay. So we have to follow this formula, this rule, okay. तो बैल खाता है, तो बैल मतलब here we are talking about specific any particular बैल, ox, that's why we use here the ox eats. Let's break down this sentence. The ox, why I use here the, because this is our subject, and here it is talking about particular ox, any specific ox, that's why I use here x. And if we will not talk about any particular cause, any specific cause, any animals, anything, then we should not use the. And after that I use here its. This is our verb, and I use extra s because this is third person singular number, the subject. And now I am going to talk about our another sentence. Next sentence, that is विद्यार्थी पढ़ता है. तो विद्यार्थी पढ़ता है, तो how we can speak? The student, विद्यार्थी. The student पढ़ना मतलब read. The student reads. Let's break down this sentence. The student reads. So this is what? This is our subject, student, and before this subject I use here the. Usually people say मतलब हम कभी लोग इसको द भी पढ़ता है और कभी दी भी, द और दी भी पढ़ता है, दी कैट, दी स्टूडेंट, द स्टूडेंट. So it's depend on your moods. And there is one logic also I will tell you in future. So you can speak the always, because I am also speaking. So the student reads. Why I use here s with verb? Because this subject it is related to third person singular number. That's why I use here s, extra s verb के साथ. And now I am going to talk about our another sentence. Our another sentence is बिल्ली खेलती है. तो बिल्ली खेलती है, how we can speak in English? तो बिल्ली खेलती है, तो बिल्ली, this is our subject, and this subject is related to third person, and this is also singular number because it is talking about one cat. It is not talking about many cats, okay. And खेलना it is our verb. तो बिल्ली खेलती है, that means the cat plays, okay. So the cat plays. Is it clear? The cat play. Here I use the before cat because here it is talking about a specific particular cat. That's why I use here the. And after that I use here s with the verb because it is this subject it is related to third person singular number. That's why verb के साथ हम लोग s लगाते हैं. And now I am going to talk about our next sentence, that is नौकर काम करता है. तो how we can speak in English? नौकर काम करता है, नौकर काम करता है, that means the servant works. Let's break down this sentence. This is subject servant, and here I use
here I use the before our subject servant, because here it is talking about single specific servant, मतलब एक नौकर के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे. It is talking about one नौकर, a specific particular one servant. That's why I use here the, because this is rule also. यदि कोई भी स्पेसिफिक कोई भी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और वो सब्जेक्ट हो, तो उसके पहले हम लोग द लगाते हैं. और यहाँ पे मैं एस लगाया हूँ बिकॉज ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इट इज रिलेटेड टू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. दैट्स व्हाई आई यूज हियर एस और यस यू कैन यूज, इट्स डिपेंड ऑन द वर्ब. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट सेंटेंस व्हिच इज वह जानता है. तो वह जानता है, हाउ वी कैन स्पीक इन इंग्लिश. तो वह जानता है, दैट मीन्स he knows. Full stop. Let's break down this sentence. So he knows. So what is this बच्चों? This is our subject and after that know, K-N-O-W, until here, not S. This is our verb and verb के साथ हम लोग यहाँ पे S लगाए हैं because this is subject and this subject it is related to third person singular number because it is talking about only one people. So that's why it is that's why I use here S with verbs. And now I'm going to talk about our next sentence which is बच्चार होता है. तो बच्चार होता है, how we can speak in English. तो बच्चार होता है मतलब you have to if you don't know about it then I am going to tell you about it. We have two words. One word is child and another word is children. Is it clear, student? And child means what? Child means when we will talk about particular or specific child, that means one child, one बच्चा, that is one people, one बच्चा मतलब children, छोटा बच्चा जो होता है, तो ये मतलब हो जाता है बच्चा, ये बच्चा हो जाता है, that means एक बच्चा. when we will talk about one child. And children, it is what? It is plural form of child. Children is the plural form of child and children means बच्चों, that means बहुत सारे बच्चों. बच्चों, it is singular form. And it is plural form. Is it clear, student? So he knows and बच्चार होता है. Here it is talking about a specific बच्चा, मतलब any particular बच्चा, specific बच्चा. That's why before this बच्चा we have to use the. तो बच्चा means the child. The child रोता है, तो cry means रोना, cries. Is it clear, student? Cry means रोना and cry के साथ हम लोग यहाँ पे verb cry verb है और इसके साथ हम लोग s लगाए हैं. cry, the child cries. यहाँ पे द इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये जो बच्चा है ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर बच्चा, किसी खास बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए कोई भी दुनिया में कोई भी चीज होता है जो खास होता है, then we have to use the before that subject. Is it clear, student? You should remember this. And now I'm going to finish. Now I'm going to end this class. And I hope you really enjoy this video and you have learned lots of things from this video. If you really enjoy this video, then please do like, share, and subscribe my YouTube channel. And you can follow me on my all social media handle. And please give me your feedback, and you can give your feedback through comment section. You can drop your comment. If you really inspired and if you really like this video, then do positive comments. If you don't like and if you find out any mistakes, anything, then you can give feedback. It should be positive or negative, it's depend on you. And thanks for watching this video.
Take care. Bye.